come? Hi Rakhi, hi Lakshita, Dhruv. पता नहीं दी हाय रमीज हाय वो दी अर्लियर लिंक उसमें कुछ ट्रबल शूटिंग इशू दिख रहा था. हाय कोमल, सुधी, हर्षिता, हाय. ऑल गुड सुधी, ऑल गुड. हाय विधि. I just had to, hi Jojo, hi. I just had to leave my planned and scheduled stream because उसमें कोई trouble shooting हो रही थी, तो I just thought कि why to shoot, why not start a new stream. Hi Rishabh, hi. Hi everyone. I think, I hope I am visible and audible clearly. Any issues with my video, audio, anything? Good evening, Vishakha. Good evening. Good evening, Manan, Bharat. Good evening. Okay, okay, okay. Okay, so this no means it's all okay. Okay. Okay, okay, okay. So this time I wanted to meet you all live on YouTube because it is becoming very difficult for me now to send the Zoom link to all my students, ex-students, plus the prospective students so that I can guide you all. So that is why I'm here in front of you to advise. But before I do anything, just one big thank you note to all of you, and apologies also. Why? I was quite absent from YouTube since last 20-25 days. Why? Now you can see a new background in my videos. We have shifted to a new place, all because of God's blessing and your love and affection, that we are expanding our team, and that is why I have shifted to a bigger place. So now we have finally settled, and now you will see me more frequently advising you, guiding you as your mentor always. So this is something which I am doing for the first time because of the admin issues. We just see कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग टाइम पे they keep on asking, तो बहुत मुश्किल हो जाता है Zoom का लिंक सबको एक एक करके भेजना, and then जब अलग अलग सब लोग आते हैं then it creates a lot of problem. So that is why I'm here. Thank you, Vishakha. Thank you. It's because of the love and affection of you all only that I need a bigger team now. So bigger team needs a bigger space. This is because of all this. But so I'm here because this time has started कि you have recently finished your exams. कुछ लोगों के हो सकता है अभी भी exams हो. So I may be coming again live because सबको मुझसे ही बात करनी है. They want my advice to be there. Maybe I again come for a live stream अगर यहाँ पे सबके issues queries solve नहीं होती. But yes, the main agenda today is advising you all what suits you for your September exam. So I'll first come on the skill level papers. आप लोगों ने skill level के अभी जो भी papers दिए हैं, now what should be the next paper? What is the study hours required? Because most of you would be working. So being working, उसको time balance करना is very essential. How will you do that? That's absolutely required. So I'll start catering to your questions one by one. I have got first question from Walid. Is BSc in Applied Accounting and Finance from Oxford University, Brooks University, OBU? Is it worth it? Pros and cons. Okay, so this is a question which a lot of people always ask. See, if you are already a graduate, then OBU will not add something additional to it. But if you are not a graduate, then this is a beautiful opportunity to go ahead with. Just submitting one research report and you get a BSc degree. But अगर already graduate हो, तो दो graduation क्यों चाहिए? That's the thing, right? Okay, so Rahul is saying, will it be there on YouTube? Rahul, yes, it should be there on YouTube. Abhinav is asking, is tax and PM manageable together with full-time job? Abhinav, I'll say no, no, no. See, I just wanted you all to be there because even the people who are not my students, before joining me or before studying under me, I wanted you all to hear what I'm saying. Do not get over pressured. If you are giving one paper, approximately 13 to 14,000 Indian rupee fees is going. So be practical. I'll tell you how much hours of study you need to give.
Another video I'm going to shortly release, that's a very sensitive issue video, because that is going since last 20-25 days, which I was not coming live or I was not there on YouTube, but I had to just share it with you all. It is going on a dangerous side. So it's better to plan your study so that you can complete it properly. So tax and PM together with work life? No, not at all. Tax is very detailed. Not at all possible. Okay, then I'll come to Sudhi's question. I got 9 paper exemption for ACCA, so I'm planning to take first exam on September. SBR, can I start with SBR? Absolutely, Sudhi. Absolutely. So SBR is the best choice, which you should go ahead with. First paper, SBR will give you a lot of insights. Absolutely go for it. Don't worry. Rachna, can we directly start PER with Big Four? Why not, Rachna? Start it. Priyanka, should I hold on till getting my results from PM? No, Priyanka, not at all. You have to start with the next paper. If by any chance PM gets stuck, you already prepared PM very well. Next quarter में PM पूरा इतना scratch से नहीं पढ़ना रहेगा ना. Value your quarter. जल्दी ACCA बनना है, right, Priyanka? Okay, Diksha is saying PM and SBL manageable with full-time job. Diksha, it can be tricky. It can be tough. Dono, because SBL is very long. But सबसे अच्छी बात, it's a new thing which I am saying. Maybe rest of the mentors are not advising that. But SBL, it is going to change from September, and this change is truly beneficial for you all. The paper number of hours has reduced. The content is same, but then you will have some pre-read material also in SBL. So SBL is going to be simple. But then with work life, SBL and PM can be very tough. SBL is 100 hours of self-study paper. 100 hours there, 60 hours PM, 160 hours in a quarter. With your work life, if you can give, then only opt for it. Otherwise, no. Okay? Okay, Lakshita is saying, what will be good combination for skill level papers? Wholly on ACCA. Okay, Lakshita, I need to first understand what is your completion level of ACCA papers. If you are starting fresh, then FR is the first choice. And for the first paper, I never recommend you go with 2 papers. First take a feel of the qualification and then go ahead with it. Okay, Ananya, changes in SBR. Yes, Ananya, I'm going to shortly release a video on that, because there is a lot of panic spreading कि SBR में इतना change हो रहा है, उतना change हो रहा है. Concepts never change. IAS, IFRS are the same. The paper pattern is changing, and I always say, technically इतने मजबूत बनो यार, paper pattern कैसा भी आए, you should be able to crack it. Because when you will be working in your real life, तो वहाँ तो कोई fixed pattern होगा ही नहीं ना. Challenges will be new. So you have to any which ways prepare in a way जो भी आए हमें करना आना चाहिए. Syllabus is not changing. But yes, shortly I am releasing that video कि SBR में क्या क्या change हो रहा है. Don't worry, Ananya. Okay, Sakshi, is MBA a good option after completing graduation in BCom with integrated course of ACCA? Sakshi, this is a very sensitive topic, especially which is very near to my heart. I also did my MBA. And my Goldman Sachs interviewer asked me, Nidhi, when you are already a chartered accountant, you are already a finance expert, what was the need of doing MBA in finance? MBA in finance ने ऐसा क्या सिखाया जो CA ने छोड़ दिया? And I was clueless. And this was really a very genuine question कि मैंने सच में ऐसा क्या CA में छोड़ा था जो मुझे MBA में करना था? These are two separate lines. So until and unless your job profiles want you to do an MBA, please do not rush because somebody is advising कि तुम 3-4 डिग्री लो तब जाके कुछ होगा. ऐसा नहीं होता. Do not trust me. Visit LinkedIn. Visit Naukri.com. Visit the profile of different successful people. You will not find them doing a lot of degrees in their initial years of job or their career. ये बाद में होता है. Maybe after 5 years, maybe after 6 years, when you are already experienced, तब आपको लगता है कि now to get promotions, I need to have something which is of a latest trend. For example, data analytics nowadays is in trend. It's getting very popular day by day. So data analytics karna, because the time requires data analytics to be done, that makes sense. So abhi MBA with an integrated ACCA, jaldi mat karo. First, complete your ACCA and then rush for your job and then see if MBA is really required or not. MBA is a heavy cost course, so just do not go with that so easily.
Okay. Then comes next question, Rakhi, pro blended model. Okay, so Rakhi, the name has been changed to the new blended model that has already been announced. Yes, I got some late because of this shifting only. My whole team was involved in making up the office and their new sitting space and area. But I have declared and announced that new blended model today itself. LinkedIn पे post किया है, just check it because now this time blended model students are, I'm just going to just pick them up like anything. I'm going to meet them every week approximately, every week, और end में छोटा सा revision भी करेंगे. Okay. Austin is asking, AA possible with full-time hectic schedule? Yes, absolutely, Austin. And as far as I remember you, you can do it. Absolutely go for it. Ritik is asking for PER whether to go for mid-size firm or big four or any other because managing studies and work is quite challenging is big four. Okay, Ritik, absolutely hats off to you, boy. You have actually raised a very fair question. Managing studies with job life. Yes, it is very difficult. Extremely difficult, I'll say. When you work for 12 hours, 12 घंटे काम करने के बाद में, it's not really possible to study for 2 hours. That absolutely is a big deal. So I always ask my students, try to keep a work-life balance. If you are already working, I'll tell you, mid-size firms and big fours, they all have 10 hours of work hours. So there's no big difference. Big four, yes, they do have a number of stretches, but then the exposure which you get with them, that is not matchable with mid-sized firms or small size firms. I'll tell you the reason. Not that कि mid-size firm बहुत अच्छी नहीं होती है, nothing like that. उनके पास काम ज्यादातर इंडियन रीजन का होगा या फिर लोकल रीजन का होगा. When we come to big fours, they are handling multinational clients. That means you will be handling UK clients, you will be handling Australian clients or US based clients. That difference does lie with big four versus Indian mid-sized firms. Mid-sized firms, you will majorly handle Indian clients, and then Indian accounting standards, Ind AS, plus the tax rules, plus the system of working, that will actually differ a lot. So that, keep that in mind. If you are getting big four, I'll always recommend go for big four. See, आपको जो ज़्यादा push करेगा, that actually will make you more polished. So consider that ways. Okay. Okay. Vicky is asking, ma'am, can I attempt FR and FM in September? Vicky, it absolutely depends how much time you can give. FR needs 70-80 hours of self-study. FM also needs 80 hours of self-study. If you can sit for 160 hours for your own studies, then absolutely go for it. I'm live on YouTube. I will announce this. One of my students, I won't name him, but you need to trust me for that. He gave 3 papers together. I can just say maybe he's watching me today and he says a yes, but then he will get caught on that. He gave 3 papers together. PM, tax, and third paper, I don't remember which he gave. Long back in 2021, when the COVID came, 2020. And he cracked all 3 papers together. करने वाले सब करते हैं. आप बस ये देखो, if the total number of study hours can you devote? If you can, go for it. बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. Okay. Dhruv, can we give professional level paper with the last paper of skill? Yes, Dhruv, you can give. So you will have to book your skill level paper. With that skill level paper, you can give P level paper also. Try not to give them on the same day or the next day. थोड़ा सा रिवीजन में दिक्कत होती है. ऑल्दो आई से कि ठीक है यार, जो पहले पढ़ लेते हैं वो एक रात पहले ऐसा क्या पढ़ लेंगे. Okay. Ramesh is saying, ma'am, SBR have some changes. So is it better to choose SBR as a first? Bilkul, Ramesh. That is what I was saying. SBR का course hasn't changed. Just the paper pattern has changed. That too, बहुत थोड़ा सा. I will help you ना यार. क्यों डरते हो, Ramesh? Okay. Yukti, which study material will be provided? What study material? Yukti, are you asking about our classes or you are talking about ACCA? ACCA is already launching its study material shortly. If you are asking about us, we do not provide study material because sometimes students actually take the study material from their friends. Why should we charge them? Maybe you can arrange the study material from your friends. The books are quite costly.
So मैं क्यों चार्ज करूं अगर आप उसको अरेंज कर सकते हैं तो. So that is why we have not kept it in the fees. Study material you have to arrange. Okay. Then Vicky, ma'am, can I attempt FR? Okay, this is answered. Manvi, working with EY for September. Manvi, yes, you can pick. But September, Manvi, is it your tax return filing period? If it is return filing period, even then I'll say either audit or PM. They are short syllabus papers. Go with them. Okay. Wahid is saying, should I start SBR after skill level exam? I'm planning to appear. Yes, 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 Wahid, absolutely. Go for it. SBR, first choice. Absolutely, you should get introduced with P level with SBR. Sakshi, I have attempted FR. Next, which paper to go? Sakshi, if you are not working, then pick up a long paper. If you are working and you feel that the quarter is going to be quite hectic, then pick up either audit or PM. Better is audit. After FR, it's always good if you go with audit. Okay. Shubham, can I do CPA along with ACC as CPA has only 4 papers? Shubham, I will say, please save your money. अगर जरूरत हो तो ही करो. Yes, I agree, it has 4 papers, but then doing 2 degrees together, either you will be employed as a CPA or as an ACCA. फिर दोनों में से एक डिग्रीज बेकार हो जाएंगी. So you have to very cautiously take a call. जैसे क्या होता था जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत लोग CA और CS का कॉम्बिनेशन करते हैं. You must have heard a lot of people doing CA and CS. उस टाइम ऐसा लगता है कि CA CS दोनों बन गए. But end of the day, when you land up in a job, either you work as a company secretary as a CS or you work as a chartered accountant. You cannot work under 2 roles. So that doesn't happen. So this is just a myth which is spread in the market that you have to take multiple qualifications to be employable. No. Soon I'm going to announce something related to your employability also. I'm soon going to help you out in your employability part. So multiple degrees won't help it. उससे नहीं होगा. मेरे हिसाब से उसमें पैसे मत बर्बाद करो. Just emphasize here and then whenever it is needed, then do something. Okay. Vivek is saying working with Genpact and looking to attempt FR and FM. So Genpact has a good work-life balance, Vivek, I'll say, but still FR and FM means 160 hours of self-study. If you are a self-study student, तो 160 को 170 बना लो. But if you are going to take coaching for both papers, again you need to add 60 hours more to it. That means 60 hours FR की coaching, 60 hours FM की coaching, and then 160 hours in की self study. I think it will be too much because भले it is Genpact or whatever company, at least 10 hours तो time आपको देना ही है. Okay, Paras is saying after FR, Paras pick up audit or PM shall be okay. Okay. Sudhi is saying currently I'm doing my BCom with ACCA, received 9 paper exemption. Shall I be able to join Big Four without completing BCom? And with only 9 paper exemption, shall I take any one exam in P level? Sudhi, this is a very case specific question. Big Fours do hire from such colleges where exemption model does work, but then they do not hire you for a position where an ACCA part qualified is needed. Because at this point of time, your exemptions are conditional. Conditional exemptions means once you complete your BCom, then only these exemptions apply. Then the second part which comes up, you all need to understand the industry. For them, you haven't passed the exam. Yes, studying for the exam is one thing, but a student who goes ahead with the rigor and the exam process clears the exam. Exemption cannot be completely equated with them. So they do get hired, but not on the roles where an ACCA part qualified sits. So that has to be very carefully understood. Apply karo, job milti hai, well and good. Nahi milti hai, start giving your P level papers. So any which ways, this has to be given. Okay, Shrishti is saying, ma'am, can I take audit with full-time job with no holidays? Yes, Shrishti, absolutely good to go. Audit is manageable. Audit is manageable, only 12 chapters to study. Devanshu, PM and audit is right option. Absolutely, Devanshu. I know you. You can crack both together. If I tell you कि audit को अकेले दो, I know you, boy, you will start crying. Raj is saying, is MCOM with integrated with 9 paper? Raj, you can do. I can just say, see, I'm very blunt on saying these things.
एमकॉम के बेसिस पे जॉब नहीं मिलती है. आप कर सकते हो, you can do that, but because you are a master's in commerce, nobody is going to get attracted to it. What will matter is your degree, professional degree. I mean, will you ever choose कि भाई इस बंदे ने ना एमकॉम करी है, मुझे इसलिए इसको चूज करना है? ऐसा नहीं है. If they are looking for someone who is an ACCA, वो मास्टर्स है कि नहीं है, it doesn't matter. He should be an ACCA. That too, when the interview comes, he should be passing that interview. That is required, right? So masters with 9 papers is going to be fine, not disastrous, but don't expect much with it. Okay, then there is Mr. A. Okay, Mr. A jo bhi hai. I'm starting with PM. I have cleared FM and just gave FR. Confident that I will clear. Very good. Any tips for PM? Yes, I'll be more frequently posting videos now because this time I'm taking only one batch live. So इस बार मेरे पास time होगा. Don't worry, I will be regularly guiding you all कि PM को crack कैसे करना है. Don't worry, okay? Sally saying which should be the first paper at P level. Sally, come for SBR. Okay, I know you clearly and I know how caliber, what caliber you hold. I have checked your mock test paper, Sally. So SBR में आ जाओ. But I will say, Sally, I have taught you FR. No coaching required. Don't take any coaching. Self study करो, लेकिन SBR करो. Okay. Then comes Junaid. Junaid is asking what should be the better study plan for FR while working in EY, and can I do it without tuition? Yes, Junaid, I really appreciate students who do self study. Really. But मैं आपको एक प्रॉब्लम बताती हूँ जुनैद. एक प्रॉब्लम आ सकती है. अच्छा, whenever I'm saying in Hindi, is it understandable to everyone? Oh, बहुत सारे messages pending हो गए. I'm going very slow, I guess. Okay. So, Junaid, I was just coming to your question ki study plan for FR working with EY. See, EY ho, chahe KPMG ho, you will have to work for 10 to 11 hours there, right? Now for FR, in total, you need 60 to 70 hours of self-study. Now, because you are not taking any coaching, you may take longer time to understand questions, but that's fine. Please do not get afraid on it कि मैं coaching नहीं ले रहा हूँ, मैं पास नहीं होऊंगा. ऐसा नहीं होता है यार. सिर्फ मेंटर्स गाइड करते हैं, वो गाइडेंस आपको खुद कैप्लन से मिल जाती है. रेकमेंड कैप्लन, बस इतना ध्यान रखना. देन 60 आवर्स के 70 आवर्स लग सकते हैं. ट्राई टू डिवोट मोर टाइम ऑन वीकेंड्स. वीकडेज में इफ पॉसिबल ट्राई टू डिवोट 5 आवर्स अक्रॉस ऑल 5 डेज. किसी दिन ऐसा होगा मे बी ऑन वेंसडे यू डू नॉट गेट टाइम, देन थर्सडे ट्राई टू सिट फॉर 1.5 hours. Then on Friday, try to sit for 1.5 hours. So try to cope up 5 hours during the week so that you are not disconnected. वहां गलती होती है जहां पे स्टूडेंट्स वीकेंड को ही पकड़ते हैं, यानी बीच के 5 दिन कंटेंट गायब. That's quite risky. So do not go off touch your papers. It's better to devote at least half an hour or 45 minutes during the weekdays also. And then weekends should be very rigorous. तो बिल्कुल possible होगा. Don't worry, Junaid. करो, self study करो. That's very good. Okay. Vidhi is saying couldn't clear AA in March. कोई बात नहीं Vidhi, अब हो जाएगा. And AA and FM बिल्कुल करो Vidhi, because if you have already studied AA, तो वापस से AA के ऊपर पूरा क्वार्टर वेस्ट मत करो. Your time is very crucial. जल्दी ACCA बनना है. Correct. Narendra Singh, ma'am, I am planning to give my F1 in July and F4 is in August. Then after skipping September, I am wondering on starting my skill level in December. हाँ, that's fine. Narendra, बिल्कुल करो. बिल्कुल, absolutely good to go. Okay. Sahitya is saying, I took my FM blended before 1 month. I properly completed. Should I do FM and FR together? Sahitya, if you can devote time of 100 hours, then opt for both. क्योंकि आपने ये 1 महीना पहले जो लिया था वो कंप्लीट हो नहीं पाया होगा अभी. तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बाद में 40 आवर्स तो चाहिए अभी. 40 नहीं, 25-30 आवर्स चाहिए. सो अगर हो जाए तो ठीक है, वरना हम नेक्स्ट क्वार्टर पे डाल देंगे. सो फॉर अस इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मनन इज सेइंग एसबीआर मैनेजेबल विद एनी अदर पेपर. मनन आई चेक्ड योर पेपर्स, राइट? SBR के साथ कुछ और पेपर, इफ यू आर नॉट वर्किंग देन SBR के साथ ऑप्शनल ले लो. इफ इट इज APM और AAA. AFM और ATX नहीं, दोनों बहुत लंबे हैं. ठीक है, नॉट दैट.
Okay, then Vishakha, PM and FM in September. Took tax, FR and audit, these three cleared so far. Okay, tax, FR and audit clear. PM and FM not working. Okay, manageable. Vishakha, good to go. College exams in July, start F4 so that I can balance both of them, or shall I do FR? Uh, Viral, it will be quite okay. कर सकते हो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगेगी. You can do it. Go for it. AA Harshit, what exactly you want to know? I'm not able to understand your question. Then Sahitya is asking blended. अच्छा ये मैंने कर लिया. Bharat is saying PM का वेट करें. PM का वेट मत करो, पढ़ाई आगे चालू करो. Okay. Then set first in P level. Vivek, start with SBR. Second week is our busy season. Okay, Manvi is saying second week of September से busy season आएगा, तो September में तो पेपर है. That's okay. ठीक है, Manvi, go for it. Then Aniket is asking, not clearing my knowledge level in first attempt. FA could not clear, like skill level have more difficulty, right? Aniket, yes. Skill level difficult to hai. But Aniket, I mean, if your knowledge level is not getting cleared, probably you need assistance from any mentor. क्योंकि वही आपको बता पाएंगे कि exactly आप कहाँ गड़बड़ जा रहे हैं. एक I'm not sure if you are taking coaching or not. We do not provide. Still I'm saying कि एक किसी से अगर एक पेपर की कोचिंग लोगे तो आपको वहां से ये बेटर आंसर मिल जाएगा कि वेयर यू आर फेलिंग. मे बी आपको कोई जैसे एमए में कुछ टेस्ट वगैरह क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं, मे बी यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देम वेल, मे बी डिसिप्लिन का इशू आ रहा है, आप रोज प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं. इफ दैट इज द क्वेश्चन, मेंटर अपने आप संभाल लेगा. जस्ट ट्राई दैट. फिर नहीं होता है तो फिर टेक अ हार्ड कॉल. ओके, MBA after ACCA, Ria, no, not required. Which profile should be preferred on finance or audit? Vivek, I will say we are beggars, not choosers. क्या होता है जब हम जॉब ढूंढने जाते हैं ना, we do not get what we want, right? So it's like a game. Whatever comes in front of you, you give interviews and you choose them. तो अभी तो जो आएगा वो लेना है. So when you have an offer letter in your hand, get in touch with me. ठीक है, मुझे LinkedIn पे लिख देना. That will also work. Okay, then is opting tax in September a good choice? Isha, absolutely. If you are working, tax needs 80 to 90 hours of self study. उसका ध्यान रखना बस. अगर आप वर्किंग हो तो 90 आवर्स पढ़ने के लिए अगर तैयार हो, then take tax. देना तो है ही पेपर यार. Okay, Lakshita is saying, ma'am, still I want to appear for 2 papers. Lakshita, I forgot which papers I suggested you. If you want 2 papers, you can opt for PM and audit both. एक practical है, एक theory है, दोनों club हो जाएगा. In ACCA, which is best optional papers? Okay, Sudhi, I will say do not choose your P-level optional papers based on their pass percentage. Pass percentage के basis पे papers choose करना समझदारी नहीं है. अपने career के हिसाब से choose करो. देखो, pass percentage audit का भी बहुत कम है, लेकिन हम देते हैं ना. Then why is it made compulsory? Because that's the main pillar for a chartered accountant. अगर हम audit miss कर जाएंगे तो हम कैसे बाकी चीजें करेंगे? So audit has to be done. Triple A बहुत low pass percentage का पेपर है. APM बहुत low pass percentage का पेपर है. But I always suggest कि अगर आपको specifically UK जाने का कोई intention दिमाग में नहीं है, then go ahead with APM and AFM. Why? These are generic papers. ये दोनों papers किसी भी country specific rules पे नहीं बने हैं. That means you can opt for these papers. These will give you some knowledge which is applicable in all countries. But if specifically you want, no, I will be going to UK only, then you have to opt for AAA and ATX. तो pass percentage को किनारे कर दो. For this point of time, you have to be very careful as to pass percentage नहीं, हमारा career कहाँ जाना चाहिए. Based on that, take a call. Okay, so no pass percentage. छोटी छोटी चीजें मत सोचो यार. You all are literally fighters. क्यों ऐसी चीजें सोचते हो? Okay, Sakshi, guide for AA. Yes, Sakshi, absolutely. From tomorrow itself, I will be giving you some short guidance videos on each paper. तो उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी कि मुझे कौन सा पेपर कब चूज करना चाहिए, because that will be quite detailed. अनिकेत, okay. अनिकेत, एक बार किसी मेंटर से बात करो. अनिकेत, कई बार क्या होता है, एक पेपर जो होता है ना वो लटकता रहता है.
मे बी दैट्स द प्रॉब्लम. आई कैन नॉट से कि आपका नॉलेज लेवल अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो यू आर नॉट फिट फॉर ACCA. मे बी दैट वन पेपर इज क्रिएटिंग ट्रबल फॉर यू. जस्ट टेक कोचिंग वंस फॉर दैट पेपर. वी आर नॉट प्रोवाइडर ऑफ दैट कोचिंग. फिर भी इसलिए बोल रही हूँ ताकि एटलीस्ट वो आपको गाइड करेंगे, आपके मॉक टेस्ट पेपर्स चेक करेंगे. हो सकता है आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो. मे बी यू आर इंटेलिजेंट इनफ बट यू जस्ट नीड गाइडेंस. वो ट्राई करके देख लो. अगर वो भी नहीं होता है देन शिफ्टिंग इन टाइम इज अ गुड आइडिया. ओके. बिग फोर ध्रुव बिल्कुल अप्लाई करो. हाउ टू प्रैक्टिस फॉर एन इंटरव्यू विवेक, यस शॉर्टली कमिंग विद दैट ऑल्सो. कराऊंगी क्योंकि अब मेरे खुद के भी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अब स्किल लेवल कंप्लीट करके P लेवल कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं. सो आई नीड टू कीप ऑन एडिंग समथिंग फॉर योर डेवलपमेंट पार्ट ऑल्सो. कैप्लन और BPP, तेज इज आस्किंग कैप्लन और BPP. तेज, मुझे पर्सनली ना कैप्लन अच्छी लगती है, लेकिन टैक्स में बच्चे रो देते हैं कैप्लन में. आई विल टेल यू व्हाई. देखो हाँ, एक वी आर लाइव हियर, मैं पब्लिकली ये चीज बोल रही हूँ. आई हैव सीन सम स्टूडेंट सेइंग कि पेपर तो BPP से आता है. बच्चे, नोबडी नोज पेपर BPP से आता है क्या? ऐसी कोई मैच फिक्सिंग नहीं है. ACCA का पेपर कहाँ से आता है, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन आइडेंटिफाई. I personally like Kaplan. Why? Its language is student friendly. BPP has tougher set of questions. ये कैप्लन में जो क्वेश्चंस हैं, BPP में जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन B और C के, ये दोनों सिमिलर हैं. Why? They are past exam questions. So whatever ACCA has given, दोनों बुक्स में वही है. So there is no difference, but yes, the explanation, the type of paragraph writing and choice of words Kaplan uses, that is more friendly. मैं तो लिटरली बोलती हूँ, if you actually develop a habit of reading Kaplan, कोचिंग की जरूरत ही नहीं है फिर. Okay. Fahim is asking, I have huge gap now, want to pursue ACCA. Why not, Fahim? Why not? Fahim, I will be turning 40 years next year. मैं ACCA कर रही हूँ. I have cleared 2 papers. साथ साथ करेंगे. Okay. Sahitya is saying, I took FM. Okay. Sahitya, I have answered, I think, your question. Okay, Ayush is asking, I have given PM exam in this attempt, but I'm not confident that it is going to be cleared. So I'm planning to give PM again. Is it a good approach to give PM and tax both? Ayush, tax will be quite difficult to club with PM. Tax बहुत लंबा है. टैक्स को एक ही क्वार्टर पे रखना. आपका अगर कोई और पेपर बचा हुआ है, इट्स बेटर टू क्लब दैट विद PM. क्योंकि PM अगर अभी नहीं भी हुआ, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो की हुई है ना, तो हार्डली लास्ट का 1 मंथ देना रहेगा PM के लिए. But tax needs, I will say, more than 3 months. उस more than 3 months को we try to complete in 2 months. So tax के साथ कुछ भी क्लब मत करो. Okay, then tips and tricks for AA. Harshit, soon I'm going to release that. Then how to prepare for interview as an ACCA part qualified. Manveer, interviews I will detail में keep on giving some videos. एक आप लोग please feel free to mention this in the comment box. क्या होता है, बिकॉज आई एम हैविंग टू मेनी मैसेजेस, मुझसे कई मैसेजेस एंड कमेंट्स छूट भी जाते हैं. एंड इवन आई कैन जस्ट नोटिस मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहे हैं दैट सम मैसेजेस आर कमिंग. सो वट एवर इज माई लेटेस्ट वीडियो, प्लीज कमेंट ऑन दैट इफ यू वॉन्ट एनी वीडियो टू बी क्रिएटेड और मैं वो भूल गई हूँ बनाना. प्लीज डू दैट. प्लीज मुझे यहाँ पे इस चीज में हेल्प करना. ओके. ओ अनिकेत, ओके, इन दैट केस अनिकेत, MBA कैन बी गुड ऑप्शन इन योर केस. हम सबके लिए कुछ कुछ तो बनाई है. जरूरी नहीं है कि जहां एकेडमिक्स इन्वॉल्व है हम वहीं अपने करियर बनाएं. पीपल आर मेकिंग करियर्स इवन इन प्लेइंग गेम्स, मेकिंग ग्राफिक्स, डेवलपिंग ग्राफिक्स. आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल हु आर ब्यूटिशियंस एंड फैशन डिजाइनर्स एंड वेरी सक्सेसफुल. सो कोई ना, चिंता नहीं. इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट, MBA की तरफ मुड़ जाओ. ओके. Samreen is saying, can we go for job while doing ACCA skill level? Yes, Samreen. I will say majority students who are doing ACCA are working. करो, बिल्कुल करो, कोई डाउट ही नहीं है. कोई बात नहीं अनिकेत, कोई बात नहीं. That's okay. मे बी ACCA किस्मत में नहीं है, इससे कुछ अच्छा किस्मत में होगा. अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम बच्चों को क्या लगता है कि किसी पेपर में नंबर कम आ जाए तो हम उसके लायक नहीं है? अगर आज मैं UPSC का पेपर दूंगी ना, नेगेटिव मार्क्स आएंगे मेरे. सम डिग्रीज आर नॉट मेंट फॉर अस. आई डोंट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स. आई डोंट लाइक दैट. तो ऐसे में पेपर देने जाऊंगी,
बैंक पीओ का एग्जाम देने जाऊंगी, आई डेफिनेटली फेल, और जहां नेगेटिव मार्किंग होगी नेगेटिव में भी चली जाऊंगी. इट डजंट प्रूव दैट आई एम नॉट इंटेलिजेंट. माई एक्सपर्टीज लाइज समवेयर एल्स. मे बी अनिकेत योर एक्सपर्टीज इज लाइंग समवेयर एल्स. तो घबराने का नहीं, ढूंढो अपने लिए कुछ. ओके. Ridhima is saying, ma'am, can you please start PM live class? Oh God, Ridhima, इतने बच्चे don't beg for anything. I am there for all of you. 17 से पहले इसलिए चालू नहीं करूंगी रिधिमा, अभी आने वाले वीक में भी एग्जाम्स होंगे स्टूडेंट्स के, जिनके टेक्निकल ग्लिच आया ना, उनके सेकेंड वीक में दे हैव देयर एग्जाम्स. सो ये रीबुक होता है, उनके एग्जाम्स खत्म फ्राइडे को होंगे और सैटरडे में बैच चालू कर रही हूँ. मुझे वही बहुत जल्दी लग रहा है. डोंट वरी, आई विल बी देयर अक्रॉस क्वार्टर फॉर यू ऑल. 17 से चालू करेंगे. अभी तुम लोगों को 5 दिन मस्ती करनी है, खींच के मस्ती कर लो, फिर बाद में मैंने खींचना है. ओके. Aman is asking, ma'am, should I go for SBL in September? Aman, I will say your choice. AFM is very technical, उसमें बहुत प्रैक्टिस करनी रहेगी. SBL बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, और क्योंकि चेंज हो रहा है, लोग डरा रहे हैं बहुत. ओहो, पेपर चेंज हो रहा है. अरे एवरी टाइम व्हेन द पेपर चेंजेस ना, द पास परसेंटेज इज बेटर. मेरे को ऐसा पता नहीं है, मैंने देखा है. ओके. September SBR, yes, Sudhi, I'm going to release that video. Don't worry. Salman is asking, can you inform us which paper will be live class paper for September? Yes, Salman. So I am taking PM live because अब ये हो रहा था कि मेरे पास students blended वाले बहुत ज़्यादा थे. So I have just changed my blended model. I want to interact with students more. जहाँ मैं पहले blended में I used to keep only 4 problem classes. Now I am going to meet every weekend. So the problem classes have increased and approximately doubled. वो double कर दिए मैंने, so that even if there is no problem, students will be called in the class and we'll practice some questions live. तो वो चीज मैं करने वाली हूँ, इसलिए मैं एक ही पेपर लाइव ले रही हूँ, PM. But FM and audit, 2 of great faculties I have launched. Because some students gave me a feedback कि मैम जो पेपर लाइव नहीं चलता ना, मैं डिसिप्लिन में नहीं रहता, फिर मुझे कहीं और जाना पड़ता है. तो जब मैं कहीं और जाता हूँ किसी और से पढ़ने, तो आप ही किसी और को बुला लो. एंड आई फाउंड इट कि हाँ यार, बात तो सही है. सो ये टू एड्रेस दिस, इफ somebody is there who wants to attend live classes, 2 of very good faculties are going to be there with us. Systems सारे मेरे ही होंगे. कैसे होंगे? जो रूटीन टेस्ट हैं मेरे ही हो रहे हैं, जो रेगुलर गाइडेंस है वो मेरा ही होगा. ट्यूटर जो लाइव पढ़ाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स डील करेगा, एक हैंड होल्डिंग करेगा, दैट विल बी समवन एल्स. उनकी वीडियो भी कल और परसों में आपको मिल जाएगी. एक और जो टीचर एफएम पढ़ाएंगे, आप लिंक्डइन पे उनको ढूंढ सकते हैं, दर्शन शाह. ही हैज बीन अ ग्रेट ट्रेनर सिंस लॉन्ग, एसोसिएटेड विद ACCA सिंस 2018, उससे भी पहले. सो ग्रेट मेंटर्स. हाँ, बट थोड़ा सा मेरे स्टूडेंट्स के साथ मेंटल ब्लॉक ये है दैट दे वांट मी टू बी देयर. I will be there, but then when there are certain students who want only live batch, this is the solution for them. मेरा FM और audit तो blended चल ही रहा है, that is still there. But किसी को live पढ़ना है, I will say फिर पढ़ लो, क्योंकि systems मेरे हैं. रूटीन टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट भी होंगे, और ऑडिट में सेक्शन बी के टेस्ट्स भी होंगे. वी टेक सेक्शन बी टेस्ट्स आल्सो. 4 to 5 section B tests do come up, which we evaluate. So that system exists, right? Okay. AA and Maninder is saying AA and FR simultaneously. Okay, Maninder, I will come up with a separate video to address this thing. Then Parth is saying P level में कोई specific paper. Yes, Parth, SBR ही लेना है. Then Tanisha, is FR with ACCA full time job? Oh. Tanisha थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. FR ले लो एक बार. If it is your first paper, दोनों को एक साथ मत करो, because AA का पूरा basis FR पे होता है. अगर आप AA और FR एक साथ करोगे तो वो जल नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी, and then you are working also. बाकी अगर जिगरा है तो सब कुछ पॉसिबल है यार. Okay. Harshit is saying for AA which study text? Kaplan. Harshit, Kaplan is good. हाँ, पढ़ना बहुत पड़ेगा, Kaplan में लिखा बहुत ज्यादा होता है. Okay. Jojo is saying, one second. Hi, how can I read FR questions quickly and understand them well without missing any content? Do you have any tips? Yes, Jojo, you have to read them loudly. You have to train your brain. जब हम बोलते हैं ना, our brain doesn't skip words.
So just while reading the question, you have to be loud enough. आपके मुंह से कान connected हो. Whatever you are saying, your ears also hear that. ये ट्राई करो धीरे धीरे. You will actually be trained enough कि वहां से ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं. Right? Try this. Okay. Then Ridhima, ma'am, planning A along with PM. How much hours self-study? Ridhima, I'll say PM needs 60 hours, audit also needs 60 hours. 120. 120 hours of self-study for PM and audit both. Okay. Angelina is saying after ACCA, can we go for law field? Angelina, this is quite poles apart. So until and unless there is a valid reason, I will not suggest this to happen. For your own ACCA curriculum, you have law as F4. That too is exempted if you are a graduate. Post that you do not read any law related subjects. Then another problem will come up with law is very country specific, even state specific. So if you do law in Indian practices, you won't be able to work in Dubai. If you cater to law of Dubai, you won't be able to practice in India. That's a very dicey thing, you know. So ACC and law is not a very good option. Okay. Aniket is saying to tax ka soch good in theory. Yes, you can do Aniket, but that's too long. बहुत लंबा है. Okay. For AA, Harshit, AA, my audit and assurance will be on blended model. For live batch, there is another faculty who is great. उनकी video demo मैं upload करूँगी कल. Okay, then comes Himanshu. Ma'am, past question section A and B available ACCA FR paper. Himanshu, अभी FR में और बाकी papers में the website is getting updated. आपका ACCA का जो resources आने वाले हैं, it's not yet clear कि उसमें exactly क्या आएगा, but a lot of content is going to come. Probably by July it should be there. Amal is asking, ma'am, I want your opinion about this. After completing skill level, is this the right time to get into a job after completing all papers? So Amal, I'll tell you, पहले तो मैं ये एडवाइस करती थी कि एक बार ACC कंप्लीट कर लो, बट सिंस लास्ट 1.5 months I am more in touch with employers and companies and I'm getting a feedback that they want people who are part qualified. That means after completing 9 papers, they really are preferring ACCA part qualified students. यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज जब वहां पे होती हैं, इट्स बेटर टू ग्रैब देयर प्रेफरेंस इज मोर कि जब तक कोई भी स्टूडेंट ACCA कंप्लीट कर ले तब तक उसका PR कुछ तो कंप्लीट हो. सो इट्स रेकमेंडेड कि आप फिर 9 पेपर्स के बाद में ज्वाइन करो बिकॉज द इंडस्ट्री वांट्स दैट. हमारे लिए एज पर आर एक्सपीरियंस वी ऑलवेज से कि आप लोगों को मैनेज करने में दिक्कत आएगी, बट द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री इज कि 9 पेपर्स के बाद में यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब. डू इट. PM and FR together, Vraj, it will be very tough. बहुत मुश्किल होएगी. Then I will take up Priyanka. Yes, regularly audit के लिए I'm going to give some tips. Don't worry. और self study कर रही हो. I love this self study thing. विधि, can I self study for FM? विधि बिल्कुल कर सकती हो. कैसे पता चलेगा? जब कुछ questions में अटकने लगोगे, अगर solution देख के भी समझ में नहीं आए, तो वहां पे घंटी बज जानी चाहिए कि यार अब सेल्फ स्टडी दिक्कत हो रही है. कोचिंग की तरफ तो तुम लोग कभी भी मोड़ सकते हो यार. ट्राई तो करो सेल्फ स्टडी एक बार. मे बी इट वर्क्स वेल. व्हाई टू इमीडिएटली गिव अप? ओके. Samreen is saying, ma'am, suggest what job should I be doing that pay? Oh, I missed the. They say that training is must in accounting and finance. Yes. So Samreen, आपको finance related job लेनी है. It should not be related to marketing. It should not be related to operations. It has to be finance related job, right? Okay. How many papers should we apply for a good job in Big Four, and like how should we be ready and prepared for the interview? Okay, Vishakha. So this is a different segment I'm going to soon launch. Soon matlab बहुत जल्दी, within a week's time. Approximately, if you are through with 3 papers of skill level, the chances become high that you will be absorbed by any Big Four. Very much likely if you are through with 9 papers, then the chances are at least 95% that Big Four is going to call you. So at least 3 papers and 4 papers, 5 papers of skill level is so wonderful. CFA after ACCA, Vishakha, yes, you can do. बिल्कुल कर सकते हो after ACCA.
Okay. Salman is asking, will there be audit blended coming attempt? Yes. Audit blended PM live बिल्कुल चल सकता है सलमान. और मैं तो ये बोलती हूँ अकेले audit will be very boring. तो PM के साथ क्लब कर लो. Okay. विरल इज आस्किंग हैविंग कॉलेज एग्जाम्स, तो एक बार सिर्फ एक ही दो. कॉलेज एग्जाम्स के साथ में बहुत दिक्कत हो जाएगी. हिमांशु इज सेइंग, बिल्कुल हिमांशु जॉब ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. हिमानी इज आस्किंग इफ पीएम बेसिक्स आर डन कैन सेल्फ स्टडी सफिशिएंट. हाँ हिमानी, क्यों नहीं. अरे कोचिंग सिर्फ इसलिए होती है कि आपको कोई क्वेश्चन आए तो उसका जवाब मिल जाए. वो क्वेश्चन अगर खुद उसका जवाब खुद ढूंढ लोगे तो क्या दिक्कत है. व्हाई नॉट. ओके विशाखा, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम. अगर बीकॉम नहीं हुई है एंड यू आर थ्रू विद योर 9 एग्जाम्स, ऑल्दो वैकेंसीज अराइज होती हैं, बट ये थोड़ा सा चक्कर हो सकता है बिकॉज देन यू विल बी अ रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट. हाउ विल यू बी सिटिंग इन द ऑफिस एंड सेम टाइम यू विल बी प्रेजेंट इन द कॉलेज. दैट कैन बी अ प्रॉब्लम. ओके थोड़ा सा वेट कर लो, फिर हो जाएगा. Okay, Aman is asking some skills so we can start working on it now, which will be helpful for the interview. Yes, आती हूँ अमन, उस पर आती हूँ. हो जाएगी विशाखा, हो जाएगी, डोंट वरी. विरल एक बार रुक जाओ. जॉब करना जब आपका 9 पेपर्स क्लियर हो, ठीक है, तब करना. ओके सो अमन इज आस्किंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग विच विल बी हेल्पफुल इन इंटरव्यू. अमन, एक कॉमन प्रॉब्लम जो मैं स्टूडेंट्स में देख रही हूँ, that is lack of communication skill, and every time employers are saying we need required skill, desired skill set nahi mil raha, and that's absolutely true. I was trying to build my own team and actually the major problem is communication. सबसे पहले सब बच्चे तुम अपनी communication पे काम करो. Now with communication I mean English as well. Why? You are in a degree, you are in a qualification where you will be dealing with different countries. They will not understand Hindi. वहां तो इंग्लिश ही चलेगी. So सबसे पहले start practicing your English. How will you do that? Stand in front of the mirror. एक एक दो sentences रोज बोलना चालू करो. Try to look impressive. I'm soon going to come up with this series also, how you should dress up for an interview, because that is also very crucial. Even what is formal wearing, what is not formal wearing, how you should stand, how you should sit, everything I'll tell. But in the meantime, please start polishing your communication skills. धीरे धीरे ही सही, but करो उसको. Okay. Anisha is asking, is it good to study FR after FM and tax? कोई दिक्कत नहीं है अनिशा, that's fine. Audit होना चाहिए once your FR is done. बाकी FM और tax के बाद में if you want to do FR, that's absolutely good to go. कोई दिक्कत नहीं है. Okay. Lakshita is saying, ma'am, I am just getting started with skill level, but still I want to appear for 2 papers, FR and audit or PM or audit. No, Lakshita, then go for FR and audit. PM or audit nahi. Yes, Himanshu, that's absolutely okay. Yes, Viral, go ahead with ACCA for the time being. हाँ बिल्कुल समरीन, विदाउट एक्सपीरियंस बिग 4 आप जा सकते हो. Somebody will start at some point of time. एक्सपीरियंस के लिए कहीं तो जाना पड़ेगा ना. Okay, Rachna is asking, I have given PM and FM in June. I'm left with audit, but I can't predict this. कोई बात नहीं रचना, AA बहुत छोटा सिलेबस का पेपर है, that's fine. So even if something backfires, AA के साथ क्लब हो जाएगा, don't worry. करो, AA की तैयारी चालू करो. Ayush is asking, if we are doing job, then is it possible that our experience will be counted before completed ACCA in PR? Yes, absolutely. आपका PR में count होता है, even if you are not done with your papers. Okay? How to motivate ourselves to keep studying? राखी, इसका तो इलाज ये है, I will be interacting with you all more. Okay? I promised you all ना कि मुझे ये वाला quarter दे दो. And literally, I really worked hard to settle in the new place with hiring people. I will try to do that. Don't worry. Okay. ACC and tax service line. Junaid is asking, tax may. Okay, Junaid. Dubai has recently launched their VAT. And because of their VAT, they are more likely to opt for ACCAs to be placed in their companies. तो जहां पे टैक्स कॉम्प्लायंस की बात आती है वहां पे ACCS बहुत फेवर्ड है. सऊदी अरेबिया, इवन UAE में, दुबई स्पेशली, यहाँ पे आप लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है. तो बिंदास
पढ़ते रहो जो करिकुलम में है। ओके, विरल इज सेइंग विरल किसी से भी पढ़ो लेकिन डेडिकेटेडली पढ़ो, नो शॉर्टकट्स प्लीज, ठीक है? डेडिकेटेडली भी पढ़ो। मेरा FR लाइव बैच नहीं होगा नेक्स्ट क्वार्टर, मोस्ट लाइकली इट इज गोइंग टू बी ब्लेंडेड विद एवरी वीकेंड क्लास, वो प्रैक्टिस सेशन होगा। ओके, स्टडिंग थियोरेटिकल क्वेश्चंस, मनल ये बहुत ये तो मेरे स्टूडेंट सब जानते हैं कि थ्योरी में तो मैं खुद ही साइलेंट हो जाती हूँ। सी आई विल टेल यू, ACCA की थ्योरी बहुत प्रिडिक्टेबल थ्योरी नहीं होती। दैट इज वाई इट बिकम्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कि आप उसको तैयार करोगे कैसे, बिकॉज वेन यू आर स्टडिंग थ्योरी यू आर ट्राइंग टू ग्रैस्प समथिंग विच इज देयर इन द बुक, बट इफ इन द एग्जाम समथिंग न्यू कम्स अप, your perspective and the perspective of the examiner may clash, they may be different, वहां बड़ा इशू आता है। बट हम उसका यही कर सकते हैं, डू नॉट ट्राई टू मग अप द थ्योरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग विल ईज यू आउट कि ठीक है मुझे इसको ना रट्टे नहीं लगाने हैं, डोंट मग इट अप, दैट्स द ओनली सोल्यूशन, कि उसको एक एक लाइन को धीरे धीरे समझो, उसको बिठाओ दिमाग में। ओके हाँ देवांशु, आई नो दिस इज योर बिगेस्ट वीकनेस। Okay, Abhishek is asking, I am a qualified chartered accountant. I am also a chartered accountant. Okay, and part qualified ACCA. In controlling field, wow, should I go for IFRS diploma or ACCA? Abhishek, I'll say any of these two. IFRS diploma will add on to the knowledge of IFRS for your profile, और ACCA कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट IFRS डिप्लोमा भी चलेगा, दैट शुड सर्व योर पर्पस। December, Viral, actually December के लिए not sure, let me just see how the new blended model works. I always have been changing things considering कि students को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो अगर लगेगा कि न्यू ब्लेंडेड मॉडल से फायदा नहीं हो रहा है, आई विल कम लाइव इन December देन, ठीक है? ओके मैम, इफ इट्स नॉट प्रिडिक्टेबल थ्योरी देन गाइड फॉर AA प्लीज। यस समरीन, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आप थ्योरी को प्रिडिक्ट मत करके जाओ। फॉर AA ऑल्सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि आप अगर ऑडिटर होगे तो क्या करोगे, दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर AA। और इसलिए मैं कहती हूँ कि AA को सेल्फ स्टडी से आप कर सकते हो, जस्ट रीड द कंटेंट, यू विल अंडरस्टैंड कि एज एन ऑडिटर अगर आप कहीं कंपनी में प्लेस होगे तो क्या करोगे, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा दैट विल बी अ न्यू केस, they will give you an entirely different new situation that will not be read by you in the study text. Then how will you handle it? By understanding the concepts, by understanding how an auditor actually faces everything. तो वही करना है। ओके हाँ विरल, नो वरीज नो वरीज, आई विल बी लाइव मोर ऑफ, आई वाज जस्ट वरीड कि मेरा पहला लाइव सेशन है, पता लगे कि मैं एड्रेस ही नहीं कर पाई, कुछ ग्लिच आया, मैं स्टूडेंट्स की चैट नहीं पढ़ पाई, सो दिस इज थोड़ा सा एज हो गई यार, आई एम नॉट एज यंग एज यू ऑल, बट दिस वेंट वेल, आई थिंक आई विल बी कमिंग लाइव अगेन, डोंट वरी। ओके Lakshita is asking, ma'am, is there any group on any social platform? यार मैं मार्केटिंग में और सोशल मीडिया में बहुत पुअर हूँ लक्षिता, so that we students can connect. यार तुम बच्चे को ही आइडिया दो प्लीज, somebody take a lead and do this for me. I mean, I am not sure how to do that. कैसे क्या करें, टेलीग्राम ग्रुप बनाएं, उस पे नील बटा सन्नाटा है मेरा सोशल मीडिया में यार। Okay, Ritik is asking, very much interested in finance, how to get into JP Morgan or Morgan Stanley. Ritik, they do not have any prediction कि वो किसको उठाएंगे। CFA करते हैं लोग to enter into Morgan Stanley, HSBC, but then suddenly an MBA comes up and he is hired. IITians are hired. तो कुछ पैटर्न नहीं है, because what I could just see in previous 15 years is they have a vacancy, they call for candidates, at that point of time जो भी candidate उनको समझ में आता है they hire him. तो as such इनके पास, अच्छा एक और प्रॉब्लम है, people do not easily leave their jobs when they are working with JP Morgan or these organizations. तो vacancy create भी बड़ी मुश्किल से होती है. So this is very tricky. समरीन, आई एम ऑलरेडी ऑन इंस्टाग्राम, मैं उसका ना अपना वो भूल गई हूँ लॉग इन आईडी और पासवर्ड, आज ही उसको अपडेट करके डालूंगी। गाइज यू नीड टू हेल्प मी विद द सोशल मीडिया, मैम इज ग्रोइंग ओल्ड, माय वाइट हेयर आर विजिबल और नॉट? ओके, आगे आगे तो नहीं दिख रहा है। ओके वंशिका इज आस्किंग, व्हाट शुड आई टेक फॉर डिसम्बर टैक्स और FM फॉर September?
दिसंबर के लिए वंशिका टैक्स ले लो. इफ बाय एनी चांस इट विल नॉट गेट क्लियर्ड, मार्च मिल जाएगा आपको उसको क्लियर करने के लिए, बिकॉज मार्च के बाद में न्यू फाइनेंस एक्ट विल कम. तो या तो टैक्स हैज टू गेट कंप्लीटेड इन सितंबर और इन दिसंबर. मार्च में टैक्स अटेम्प्ट मत करना, दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. देवांशु, थैंक यू. ओके, सिमरन इज आस्किंग आफ्टर डूइंग सीएफए लेवल 1 इज एसीसीए गुड ऑप्शन. सिमरन, आपको सबसे पहले ये देखना है कि इफ यू वांट टू एंटर इनटू सीएफए और एसीसीए, दोनों चीजें विल नॉट बेनिफिट यू. सो फर्स्ट मेक दैट इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि मुझे 2 डिग्रियां नहीं करनी है. देखो बच्चों, एक चीज समझो, मल्टीपल डिग्रीज में तुम अपनी लाइफ को उलझा दोगे, लाइफ में क्लैरिटी नहीं होगी. यू विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग मोर कि मैंने तो 2 डिग्री करी है, मुझे तो ज्यादा पैसे मिलने चाहिए. जो कंपनी हायर करने आएगी, दैट कंपनी वांट्स यू फॉर अ सिंगल रोल. दे डू नॉट वांट यू टू हैव मल्टीपल क्वालिफिकेशंस. मैं आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल. Let's suppose I go to a school and ask the directors there, the chairman there, they are taking my interview. I tell them I want to become a principal, small school, और मैं उनको बोलती हूँ कि I will handle your school which is till grade 2, pay me 20 lakh 30 lakh rupees. Will they pay me? They will ask me कि 30 lakhs क्यों भैया? I will tell them I am a postgraduate, I am a chartered accountant, I am a part qualified ACCA, I am an MBA. I have so many qualifications. Pay me 30 lakh rupees और मैं आपकी प्रिंसिपल बनती हूँ. What do you think? वो देंगे आपको 30 lakhs? मुझे दे देंगे? वो नहीं देंगे. For them, I am overqualified. I am overqualified for that role. So doing multiple degrees won't make you eligible for any particular role. For one role, 1 degree is needed. If you are doing CFA, ACCA, CA, CS, सारे प्रोफाइल्स हैंडल एक बंदा नहीं करता. So 1 degree at a time, next degree only when it is needed. Okay, Samrin, thank you. Okay, Shahid is asking, ma'am, after law, what should I go for? Shahid, if you are asking about skill level, start with FR. FR is accounting, सबसे पहले वही होना चाहिए. हाँ राखी, आई कंप्लीटली सेकेंड दैट. इसीलिए एक लाइव बैच आई एम नॉट टेकिंग, आई एम टेकिंग ओनली 1 बैच. ये 2 बैचेस लेने के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिलता. एंड नाउ बिकॉज स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग, हर बैच में 80+ स्टूडेंट्स हो रहे हैं, तो उनके पेपर्स और टेस्ट ही चेक करती रह जाती हूँ मैं. सो आई एम जस्ट रिलीविंग माई सेल्फ फ्रॉम 1 लाइव बैच. पक्का से यू विल फाइंड मी मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया नाउ. ओके, Komal is asking, ma'am, what is the best combination of P level with FM? P level FM के साथ कौन सा जाएगा? बच्चे FM काफी डिटेल्ड है, तो FM के साथ if you are already working, I will say कि एक ही करो यार, अगर वर्किंग हो तो. लेकिन वर्किंग नहीं हो, फुल टाइम स्टूडेंट हो, तो भी आपके पास SBR और FM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. Ashish, hi Ashish, how are you? Okay, Manal is asking, can I give FM and FR both in September? Manal, बच्चे ये बहुत मुश्किल हो सकता है. FM and FR needs 120 hours of self study. अगर ये दे सकते हो, then go for it. Okay, Virala is asking, ma'am, people on YouTube say there are many job opportunities, and that for that they say to check ACCA portal. But ma'am, in the ACCA portal, when I checked in eligibility, they say they need CA. You are right. That is why I was just going to say, YouTube is a platform where no responsibility is taken. मैं अपनी भी कई वीडियोस में ये बोलती हूँ, प्लीज क्रॉस चेक. एंड एट मेनी प्लेसेस आई हैव टू शो सम स्क्रीनशॉट्स आल्सो ऑन द स्क्रीन. मेरे पे भी आंख बंद करके विश्वास मत करो. यू हैव टू क्रॉस चेक. आई विल टेल यू हाउ टू क्रॉस चेक. सो आई विल टेल यू, विरल, अब ये वैकेंसीज कैसे निकलती हैं. यू हैव टू क्रिएट अ गुड नेटवर्क ऑन लिंक्डइन. मोस्टली यू ऑल आर देयर लिंक्ड विद मी ऑल्सो. ये लिंक्डइन से ही शायद आप लोगों को पता चला होगा. तो लिंक्डइन पे एक तो कनेक्टेड रहो. Then there are a lot of employers who are looking for ACCAs. They are in touch with us. They are directly searching you all. थोड़ी सी अपनी LinkedIn पे activity बढ़ाओ. When I post something and students comment on it, students like it, or whatever you write, that actually pops up to all the employers also.
ACCA जो कम्युनिटी बनी हुई है, बी एक्टिव देयर, स्टार्ट राइटिंग समथिंग, छोटा लिखो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, गलती तो करोगे, कोई बात नहीं यार, छोटा लिख लो, बट एटलीस्ट लेट योर थॉट्स कम आउट, लेट द वर्ल्ड नो दैट देयर इज समवन हु एग्जिस्ट्स ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, वो करने लग जाओ, ठीक है। तो ACCA करियर्स पे अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अपने आप लोग आपको कॉल करेंगे। naukri.com से कैसे पहुंचना है, दैट ऑल्सो आई विल मेक अ वीडियो ऑन। Okay, then we have Mamta. If we take skill level as exemption, can we clear P level with MBA in international finance? कर सकते हैं ममता, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बट ठीक है यार, दिक्कत को मैनेज करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना। आशीष is saying I'm working in an investment banking firm. आशीष, लख लख बधाइयाँ, and I'm considering preparing for 2 subjects. However, I'll reach out to you. आशीष, that's okay. 2 subjects इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ दिक्कत आएगी, थोड़ा सा देख के, ठीक है। ओके, देन वी हैव, ये मैसेजेस रिट्रैक्टेड आ रहा है बच्चों, ये क्या है? इज इट दैट माय नेटवर्क इज नॉट एबल टू प्रोसेस इट, ऐसा कुछ? ओके, Kunal is saying, ma'am, I'm working professional. I want to give ATX in September. How should I study? ATX is very detailed, very, 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 very detailed. इसमें टैक्स तो है ही है, you will have additional 60% more syllabus. So if you want to prepare for ATX, start in time. Last time पे कोशिश करके भी ये नहीं होगा, ठीक है? So just reach in time for ATX. Okay, Aftab is there. I'm pronouncing your name correct, I guess. Okay. Ma'am, if I start studying now, as it is better to go for December. No, 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 don't give more than 3 months for AA, please. Bache, it's a very small syllabus paper, 12 chapters, that's it. उसके लिए 1 quarter से ज़्यादा मत लगाओ। नहीं विरल, don't worry, you will not see any ACCA who is not employed. सब employed हैं यार, घबराओ नहीं। Okay. Balaji is asking, ma'am, I want to do self-study for FR with Kaplan. Is it okay? Yes, absolutely good to go. Don't miss practicing questions on practice platform. Okay, Balaji, you have to visit the practice platform also. Ritu is asking, F7, FR, F8 can be together. Yes, Ritu, absolutely doable. Then बहुत सारे messages miss हो गए मुझसे. Indian UK tax syllabus different? Yes, Himanshu, poles apart. इंडियन टैक्स फाइनेंशियल ईयर की बात करता है, इनका तो टैक्स ईयर बहुत ही निराला होता है। 6 अप्रैल से चालू होता है, नेक्स्ट ईयर 5 अप्रैल पे खत्म होता है। पोल्स अपार्ट है सब। समरीन इज आस्किंग, एए के साथ पी लेवल का एसबीआर कर लो, गुड ऑप्शन। Then Shanzi is asking, how much would be enough time for taxation? Shanzi, you need 80 hours, around 80 hours to study tax. It's very detailed paper, a lot of provisions, a lot of confusion. Time dena uspe. Okay, Ria is asking, is it advisable to take 3 papers? Ria, I was just sharing this with everyone. One of my students has cracked 3 papers together. Doable to hai. बट हाँ, देन मेहनत भी बहुत ज्यादा है। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड विद दैट। Ritu, live papers 3 are coming up. PM, I am taking, audit is being taken by someone else. Janki Panchal ma'am is there. She is an ACCA, बहुत experienced है. And Darshan Shah is taking FM. So Darshan, so I think you would have seen when my throat was choked. Darshan took some classes there. Okay, Ridhima is asking, starting skill level AA. No, Ridhika, it can be a risky thing, you know. See, understand one thing. Audit means you are trying to check if the financial statements are made correct or not. पहले financial statements बनाने आने चाहिए ना, वो कैसे बनाने आएंगे? FR से. FR will teach you how to make financial statements, what are the IFRS, what are the standards which are applicable, किसी चीज का treatment क्या होना चाहिए. Once that is done, then only audit can be done. तो ये उल्टा सीक्वेंस नहीं करना। हाँ, लोग पास हुए हैं कहीं भी, लेकिन it is not essential that the same what should I say, इत्तेफाक आपके साथ भी हो. Maybe that chance doesn't happen with you. So be very cautious. The logic is FR first, then audit. Okay. Then Ritu, like, okay, answered that. Then Balaji, how much time? FR, for FR you need 70 hours. 70 hours you will need. Yes, Himanshu, UK tax syllabus is very lengthy.
Ria, FM and FR, Ria, it will be tough. FM and FR self studies 120 hours to 130 hours. So self study hours are quite more in both. Okay, Ridhima, bilkul Ridhima, karo. See, I am not sitting here, guys, so that I can solicit you all ki mere se padho. Need se padho. I am here because I am not able to answer you all on LinkedIn or WhatsApp, और मैं आंसर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए I just wanted to come live कि ठीक है मैं एड्रेस कर दूंगी नए स्टूडेंट्स को भी. Okay, Aftab is asking how much time do we need for FM? So you need 70 hours approx. This is your self-study hours. If you take coaching, then add on 60 hours to that also. Rachit, ma'am, I have exams next month on weekends. Oh, so I won't be able to take live. Should I take tax in December or FM in September? Rachit, you connect with me separately. Okay, I will have to make your schedule accordingly then. Okay. Samreen, for FR, syllabus is gonna change. What change? Okay, Samreen, whatever changes happen, no major drastic change happens. Nothing like that. So if there is anything which comes up is some small ups and downs there. Don't panic. Accountancy doesn't change roller coaster types. ऐसा नहीं होता. थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है. इतना मैनेजेबल होता है. Don't panic. करो. Is Kaplan okay to rely? Yes, Manal, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है. बिंदास. Kaplan. Rakshita is asking, should I take FM or FR in September? Both can be tricky. FM and FR means 130 hours of self-study. Okay. Ria is asking, tax and FR. Oh, very tough. Tax needs 90 to 100 hours of self-study. Tax is very long. Tax and FR can be quite risky, girl. Just think twice. Gauri is asking, after FR, should I do 2 exams, audit, and 1 more paper for September? Doing with job. Gauri, that can be difficult. So audit and PM can be clubbed together. But then again, because you are working, then it can be quite difficult. Try करके देख लो, manage हो जाएगा तो ठीक है. Okay, Mamta is asking, taking skill level exemption is better one. नहीं ममता, ऐसा कुछ नहीं होगा. थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा. जहां पीछे के जो भी एक कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको पता नहीं होंगे, बाद में पढ़ लेना. दैट्स ओके. अब जब एग्जामिशन मिल रही है तो फिर ले लो. एफर्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा देने के लिए प्रिपेयर्ड रहना. ओके. विरल इज सेइंग कंप्लीटिंग 4 पेपर्स, बीकॉम ऑनर्स. नहीं विरल, यू आर एब्सोल्युटली ऑन टाइम. कोई बात नहीं. वी हैव मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हु आर ग्रेजुएट्स. तो वो ग्रेजुएशन करके 4 पेपर्स एग्जामिशन लेके एंड देन दे स्टार्ट देयर एसीसीए जर्नी. कोई बात नहीं. टाइम पीछे नहीं ले जा सकते. रिलैक्स, मस्त रहो. विशाखा, नो वरीज बच्चे. ओके. Rakshita is saying, which is comparatively easy, FR or FM? I'll say FR. FR is better. FM में there is 40 marks approximately comes from theory, and that theory is also very tricky. That can be quite tricky for you. Okay. The change doesn't happen much. You all look very worried for the changes which can happen in the syllabus. Changes बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. Changes की list जितनी बड़ी दिखती है, that is replacement of some sentences from the syllabus. So don't worry. Syllabus up and down change कभी नहीं होता है. Audit and PM. Vraj, audit and PM can go. Audit with FR चला जाता है, थोड़ा सा difficult हो जाता है. Ria, which paper is good to take with tax? Ria, मेरे हिसाब से सिर्फ टैक्स अकेले ही दे दो. टैक्स इज वेरी डिटेल्ड. फिर भी कुछ इसके साथ देना है तो फिर पीएम दे दो. युक्ति, मैम, शुड आई गो फॉर टैक्स और पीएम इन सितंबर? सो युक्ति, इफ यू आर वर्किंग, अगर आपका बिजी सीजन है तो पीएम करो. पीएम का सिलेबस छोटा है. अगर आपका बिजी सीजन नहीं है तो टैक्स करो. टैक्स का सिलेबस बहुत लंबा है तो टाइम देना पड़ेगा टैक्स के लिए. पीएम कम टाइम में भी हो जाता है. सो कंसिडरिंग दैट डिसाइड. अमृत, मैम, आई जस्ट गेव पीएम, नॉट श्योर, आई एम फुल टाइम स्टूडेंट, नो प्रैक्टिस. यस, एब्सोल्युटली अमृत, ए ऑप्ट कर लो. राखी राखी, कल कनेक्ट करते हैं. ऋतु, एफएम थ्योरी इज वेरी चैलेंजिंग. यस ऋतु, आई सेकंड दैट.
विरल, नो ऑफलाइन क्लासेस, आई एम वेरी बैड एट एडमिनिस्ट्रेशन. मुझसे तो मेरी टीम छोटी सी नहीं संभलती यार. अगर मैं वहां पे फेस टू फेस क्लासेस में बैठ जाऊंगी वो तो बिल्कुल ही नहीं संभलेगा. ओके, AA and ATX. Oh, Samreen, this is very tough. AA and ATX बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. AA और SBL आप फिर भी ले सकते हो, स्टिल डूएबल. ठीक है, ये कर सकते हो. स्टडी गाइडेंस फॉर FR. ओके मेघा, अलग अलग पेपर्स की इंडिविजुअल गाइडेंस वीडियोस आई विल बी लॉन्चिंग सून. ओके, then let's come to Rachna. ACC gives choices 2 or 4 options in MCQs that reduces. हाँ रचना, ये तो रिस्क है, बट अपने मन को ना ऐसे समझाया करो कि इस तरह के क्वेश्चंस यू विल हैव 4-5, नॉट मोर देन दैट. 5 क्वेश्चंस लाइक दिस जिसमें मल्टीपल आंसर्स होते हैं, यू विल लूज 10 मार्क्स. उससे ज्यादा क्या होगा. 90 मार्क्स अच्छे से करो, it's definitely going to give you more than 55 marks. Okay, so don't worry. Yes, Rakhi, करेंगे, बिल्कुल करेंगे. Saket is asking, in my skill level 2 papers PM and FM are left. Saket, if you are working तब तो एक ही दो, लेकिन अगर वर्किंग नहीं हो तो दोनों दे दो. साकेत, आई रिमेंबर यू, मैंने आपके पेपर्स चेक किए हैं, मुझे गलत याद आ रहा है क्या, पता नहीं. ओके, अमृत, इज AA डूएबल विदाउट. यस अमृत, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं है. हर स्टूडेंट स्किल लेवल वाला जॉब नहीं करता है, तो अगर वो जॉब नहीं कर रहा है तो भी AA क्लियर करता है, डोंट वरी. Okay, Dhaval is asking, ma'am, I have taken exemption. How much time it should take to complete skill level and professional level? Dhaval, I will say try to do it ASAP. जितनी जल्दी डिग्री होगी ना उतनी जल्दी जॉब लगेगी. और अगर आप लोग ये मानते हो that I am worth 10 lakhs of package, और even चलो I say कि you are worth 6 lakhs bare minimum, 50,000 per month is the salary. अब अगर आप पेपर्स को बहुत बहुत टाइम लगा के कर रहे हो, 50,000 per month is the opportunity cost which you are bearing. Consider that. एक डिग्री का जो टाइम लिमिट होता है ना, try to complete it उसी टाइम लिमिट में. उससे ज्यादा टाइम लगाओगे, every month will cost you. इसलिए जल्दी से जल्दी इसको करने की कोशिश करो. ठीक है. Okay, Mohan is asking. Okay, I'll take last 1 or 2 questions. I think majority are addressed now. Can I do MBA while studying ACCA? मोहन, नीड नहीं है. 2 डिग्रियों की, दैट टू विच आर पोल्स अपार्ट, काफी चैलेंजिंग हो जाएगी. करने को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आइदर यू विल वर्क एज एन ACCA और एज एन MBA इन द कंपनी. सो देयर इज no matching. They do not supplement each other. Okay, last question, Rashita's question. FR I gave in March but couldn't clear. That's okay, कोई बात नहीं यार, हो जाता है इधर उधर. Now in June I've given FM and I feel my FM was very bad. नहीं Rakshita, don't worry. Sometimes some papers are not in our destiny at that point of time. 4-5 marks का margin है, इसका मतलब आप कहीं कोई छोटी सी चीज में चूक रहे हो. उस छोटी सी चीज को पकड़ो and give FR again. एक बार FM को साइड कर दो, FR पहले दो, क्योंकि FR इज मोर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. अगर वो पकड़ में आ जाएगा ना, बाकी चीजें पकड़ में आ जाएंगी. सो गिव वन मोर रीसेट. ग्लोबल बच्चे, प्राक्षी, चूज ग्लोबल. ओके, रिया, क्या सजेस्ट करना है, मुझसे मैसेज मिस हो गया क्या. कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट योर FR blended course? So FR blended and other papers blended, I am going to release a video tomorrow, because abhi literally I am not able to answer everyone's questions, so I need to come up with that video tomorrow for sure. You will get a clarity on what all batches are being launched, how the classes will be done, everything you will find tomorrow. Okay, Aftab, so what happens is the papers which I don't take live, we call it as a blended course, where the class recordings of the latest batch are given to students in one go. And then I take problem classes for that, practice sessions, and then mock test papers, regular test, everything remains same. But every weekend I'm not there in front of the student. But from this quarter, I'll be there in front of them every weekend. Even for 1 hour, it will be a practice session. So that detail I'm going to bring up tomorrow. Okay.
FR in June, FR and A, बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल कर दो. अगर FR नहीं दे पाए हो, FR and audit both in June absolutely doable. ठीक है, चलिए जी. So let's just put a pause to this session here. If there is anything which I could not answer, please write that in the comment section. Ma'am is growing old, I need some reminder. एक बार मुझे डाल देना. And then whatever videos you want कि इसमें मैम हम बहुत फंस रहे हैं, please guide something related to this. I'll be happy to help you all, but you all need to help me with this. Understand कि तुम फंस कहाँ रहे हो, वो तो बताओ मुझे. Okay. Yes, Lakshita, you can buy that. That's already there, and tomorrow I'll be announcing that ताकि आपके at least वो questions तो cover up हो जाएं. Soon I will be coming up with a very critical video. एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, because that is coming from the industry, and I want to give you that message which your employers want to give you. Now they directly cannot give you, I can at least give that. Okay, so that video is going to be very helpful for you. Basically an eye opener for all of you. तो ध्यान से, and for September, please start in time. Time flies like this. कोई last minute एकदम भागदौड़ नहीं, कोई last minute panic नहीं. Do not do that. Plan in time, because this is very critical. So that video which is going to come up, probably it is going to come tomorrow or next day. So stay tuned, and anything else, please do write in the comment section. Okay, guys, thank you so much for connecting, for letting me know what all problems you all face. Thank you so much. Bye, guys. Bye.